Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giribharadhari Gopi Jana Vallabha Giribharadhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giribharadhari Gopi Jana Vallabha Giribharadhari Yashodanandana Vraja Janardan Yashodanandana Vraja Janardan Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Balachari
Yamuna Tiravancha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Yasodanandana Braja Janardan Yasodanandana Braja Janardan Yamuna Tiravanchari Yamuna Tiravanchari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Nichalila Pavista Om Vishnupad Paramahamsa Paribrajacharya Astotarasat Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Pavista Om Vishnupad Paramahamsa Paribrajacharya Astotarasat Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhattaraguna Sajiva Gopala Bhatta Dasaraguna Sad Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। चिल प्रभुपाद शासन भूषण की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Krishna Krishna Vishnu Prabhupada Society Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Desatarine Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurudmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya-Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanditamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from the Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 28, Text 14. Where is the English Bhagavatam? Prabhupada has the English Bhagavatam? Yes. The English fourth canto, Prabhupada has it? Okay. Huh? तो हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 14 पढ़ रहे हैं। ना सेके सा अभी तुम तत्रा पुरो कृच्छ्रा पुरो
Vipathu Gantum Aichat Tataha Briksha Kotarat Kotarat Iva Iva Saanulat Naseke Sobitong Tatra Seke Sovitum Tatra Puro Krichro Rube Patu Guru Kuchori Gantang Aicha Tato Briksha Kotarat Iva Shanalat Kotarat Iva Sanala Naseke Sobitong Tatra Seke Sovitum Tatra Puro Krichro Rube Patu Guru Kuchori Vipatu Gantong Aicha Tato Briksha Gandam Aichatato Vriksha Kotarat Iva Shanalat Kotarat Iva Sanala Naseke Sovitum Tatra Guru Kuchori Vipatu Gantumaichattato Vriksha Kotaraliva Sanala Gantumaichattato Vriksha Kotaraliva Sanala Mataji, Naseke Sovitum Tatra word for word meaning? No, not. No. Seke Seke was able, was able sa he avitum to protect, tatra there, puru very much, krichra difficulty, puru great, vipatu suffering, gantum to go out, aichat decide, tata from there, vriksha of a tree, kotarat from the hollow, iva like, sa analat and fire. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
As a serpent living within the cavity of a tree wishes to live when there is a forest fire, so the city's police superintendent, the snake, wished to leave the city due to the fire's severe heat. जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। Purport. It becomes very difficult for snakes to leave a forest when there is a fire. Other animals may flee due to their long legs, but serpents, only being able to crawl, are generally burnt in the fire. At the last stage, the limbs of the body are not as much affected as the life air. तात्पर्य, जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है। अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भाग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प रेंग कर चल सकने के कारण प्राय अग्नि में जल जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। Pran, life air. So the life air is considered as the source of why the energy is still inside, or how the soul and the body are intact together. तो जो प्राण या लाइफ एयर है, ये शरीर के अंदर है, ये स्रोत है जीवन शक्ति की, जिसकी वजह से चला। Which means that as long as the body and the soul are together, then there is life air. तो इसका अर्थ है जब तक शरीर और आत्मा साथ में है, तो उसका अर्थ है प्राण भी है। When the life air is disturbed, that means there is difficulty that the soul within the body, difficulty in help. तो जब प्राण शरीर में है तो उसको डिफिकल्टी आता है। जब just like when there is a disease, you cannot breathe properly. जैसे कि हमें कोई बीमारी होता है तो हमें सांस लेने में समस्या आती है। And sometimes you have to use oxygen to maintain one's body and soul together. कभी कभी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है अपने शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए। Just like what happened recently in the second wave of COVID, there's a shortage of oxygen. So many people died. जैसे कि अभी सेकेंड वेव था कोविड का, उसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ गया, तो ऑक्सीजन के कारण कई लोगों का मृत्यु हो गया। It's amazing. It's like all over India there was a shortage of oxygen tanks at that time. तो पूरा भारत में उस समय पे ऑक्सीजन का कमी आ गई थी, especially in Delhi. खास करके दिल्ली में। What about here in Chandigarh? There was a shortage also? No, No? no. Not so much. So yes, our body is composed of different kinds of air. तो हमारे शरीर में अलग प्रकार की वायु है। So here the serpent is compared to the life air. तो यहाँ पे जो सर्प है उसको प्राण वायु के साथ तुलना किया गया। That the life air sometimes is still there even though the person cannot maintain his body. This is what you call, sometimes a person is in coma. कभी कभी जो आत्मा है, व्यक्ति है, वो कोमा में होता है, मतलब उसका प्राण वायु तो शरीर में है लेकिन वो अब कुछ कर नहीं पा रहा, उसको शरीर को मेंटेन नहीं कर पा रहा। What does it mean that if a person is in coma? That means he's still there, but he's like
vegetable. कोमा का अर्थ है जैसे कि वो वास्तव में तो जीवित तो है लेकिन वो सब्जी जैसे ही है, मतलब कुछ करने। The person is conscious because the soul is there and the life air is there, but is disturbed because of a disease. But somehow he's not able to reciprocate, he's not able to talk, but he can still, is very sound, is very conscious. जो कोमा स्थिति में जो जीवात्मा जो आत्मा शरीर के अंदर है उसमें चेतना है, प्राण है, लेकिन वो कुछ रेसिप्रोकेट है, आदान प्रदान किसी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन वो उसमें चेतना पूर्ण रूप से है। It's what he called almost like a living dead. तो ये इस तरह से जीवित मृत अवस्था है, जीवन है लेकिन फिर भी मृत है। Alive, but cannot talk, cannot express, but knows what's going on. तो वास्तव में जीवित है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ किसी को बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, लेकिन वो चेतना है क्या चल रहा है उसको समझ आता है। He knows who's taking care of him. उसको पता है कि कौन उसका देखभाल कर रहे हैं। And he knows also who's cheating him. उसका ये भी पता रहता है कि कौन उसके साथ धोखा कर रहा है। He's fully awake, but cannot really express what he wanted to say. वो पूरी तरह से चेतना उसमें है लेकिन वो अपना वो एक्सप्रेस या बता नहीं सकता वो क्या चाहता है। And it's very difficult for him to live because the next body is not ready yet. Material nature, the next body is not being offered yet. तो उसको रहने के लिए उस शरीर में रहने बहुत कष्टमय है, लेकिन अभी उसके लिए दूसरा शरीर प्रकृति ने तय नहीं किया है। And therefore he is stuck in that body. तो इसीलिए वो उसी जिस शरीर में बीमारी है उसी में फंसा हुआ है। Breathing, living, eating. Now they cannot eat sometimes with like this solid food, so they're being fed through intravenous. तो वो जीवित है, वो सांस ले रहा है और खा भी रहा है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं खाता, लेकिन वो नाली के थ्रू इंट्रावेनस। They get their energy from intravenous. तो उनको शक्ति इंट्रावेनस फूड जो देते हैं उसके थ्रू प्राप्त होता है। So it's very difficult, as Prabhupada says here, it becomes very difficult for snakes to live a forest where there is a fire. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जब आग लग जाता है जंगल में तो शाम को बच के निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। The body is compared to the city. तो यहाँ पे हमारे जो शरीर है उसको शहर के साथ तुलना किया गया है। And the superintendent of the city is the serpent, who is the air. तो जो पुलिस अधीक्षक है इस शहर का वो है इस सर्प के साथ तुलना किया गया है जो प्राण है। Because a snake, he cannot really run very fast. वास्तव में सर्प है जो बहुत ही फास्ट दौड़ के नहीं जा सकता। There is no legs. क्योंकि उसका कोई पैर नहीं है। Right? Unlike other animals, they can run very fast. जैसे कि दूसरे पशु हैं वो जल्दी बहुत तेज भाग सकते हैं। So in spite of this Vishnu Jwar means the heat of the body is so excruciating, is so painful, is so miserable, but the life air is there, it cannot move. तो ये जो विष्णु ज्वर है, जो शरीर का जो उत्ताप बढ़ जाता है वो इतने कष्टदायी है, इतना कष्टकर है, फिर भी जो प्राण है वो उसी शरीर में फंसा रहता है। As we were talking the other day, Bhishma Dev is like this. Bhishma Pitamaha, he's been lying down in a bed of arrows for many days, even while the battle of Kurukshetra is going on. But he's not feeling the pain though, but he's there. तो हम देख सुने हैं कि जैसे भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के बाद भी वो कई दिनों तक शरशय्या में लेटे हुए थे, लेकिन उनको कोई कष्ट का अनुभूति नहीं हो रहा था। He is well sound. वो बिल्कुल उनका ठीक चेतना था। Then he says when he was thirsty, then an arrow was shot and then water
goes straight to his mouth. या जब Is it उनको Ganga? यस जब उनको Ganga प्या- Jal. जब प्यास लगा तो एक जमीन में अर्जुन ने तीर मारा और उनके मुंह में सीधा गंगा जल आगे गिरा। And he was able to teach Yudhishthir Maharaj, who is to be enthroned as the next emperor of the world, and he taught him about the science of how to rule the citizens. और युधिष्ठिर महाराज जो कि आगे अगला राजा बनने वाले थे उनको कैसे शासन करना है उसका विज्ञान उन्होंने बताया। He cannot move, he's immobile, and at night time his body is being protected because the jackals and other wild animals, they're ready to pounce his body and eat him. सो वो वहीं पे लेटे रहते और रात के समय पे उनको शरीर को सुरक्षा दिया जाता था, नहीं तो जो है क्या जैकल्स लोमड़ी इत्यादि है उनको शरीर को नोच के खा लेने के लिए तैयार थे। Yeah, so he's being protected because in the history of the Mahabharata, he can choose the right moment when he can live his body. He got this benediction from his father. उनको विष्णुदेव को उनके पिता से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि वो किसी भी समय शरीर छोड़ सकते हैं सही समय पे। Can we choose the day or the time when or the place? क्या हम Where and when can we leave our body? क्या हमारे पास ये सुविधा है कि हम किस जगह पे किस समय पे किस दिन पे शरीर छोड़ें? No, when our time is up, we don't even know when our time will be up, and it could be at any moment. हमें ये भी नहीं पता कि हमारा समय कब पूरा हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। Sometimes people died while sleeping. कई बार लोग सोते सोते शरीर छोड़ देते हैं। They don't get up anymore. फिर वो जागते नहीं करें। Permanent sleep. परमानेंट स्लीप। Because that or sleep is like temporary death. वास्तव में जो निद्रा है एक तरह से अस्थायी रूप से मृत्यु है। And then when our body not able to function anymore, the organs, then the soul will go on to the next body. जब हमारा शरीर के जो अंग है और कोई कार्य नहीं करते हैं फिर आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। Whether we like it or not, the body will be completely dead and the soul has to go on. हमें अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी हो, जब शरीर जो है पूर्णतः मृत हो जाता है और आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे में चला जाता है। But the people who are bereft of knowledge about the soul, they think that the body is the self. But then at the time of death, it's like if someone died in the family, they will cry. They will be in anguish. So जिसको इस आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, जब उसका मृत्यु होता है और खास करके उनके परिवार वाले बहुत ही दुखी होते हैं, रोते हैं। And he will say, "Oh, my father is gone. He just left." वो सोचते कि मेरे पिताजी चले गए। But then you will ask, "What are you saying? Your father is gone. He's still there. You see, his body is still there." तो आप बता सकते कि वास्तव में आप बोल रहे पिता चले गए लेकिन उनका शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है। Who is gone? The body or something else? तो वास्तव में शरीर चला गया है और कुछ चला गया। Is a soul. तो वास्तव में आत्मा चला गया। But an intelligent person, he doesn't lament for the loss of one's body or the soul. Doesn't lament. तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो शरीर का नष्ट होने के आत्मा चले जाने पे वो उससे दुख प्रकट नहीं करता। As Krishna says, you are mourning for that which is not worthy of grief. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। For the soul is eternal. आत्मा शाश्वत है। There is never a time that I did not exist, nor you did not exist. We exist
before, we exist now, and we also exist after. ऐसा कोई समय नहीं था कि हम थे नहीं, या ऐसा समय कोई नहीं है कि हम नहीं रहेंगे। हम पहले भी थे और अभी भी हैं और बाद में रहेंगे। Now Bhismadev, he knows that Lord Krishna is none different than his worshipable Lord Narayana. तो भीष्मदेव जानते थे कि कृष्ण जो है वो उनकी जो परम आराध्य नारायण है। There is no difference between Lord Krishna having two-armed form and Lord Narayana having four-armed form. तो भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में है और जो भगवान नारायण जो चतुर्भुज रूप में है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। So out of humility, the relationship between Bhishmadev and Lord Krishna is that chivalry. Chivalry. तो जो भगवान श्री कृष्ण और भीष्मदेव के बीच में जो संबंध था वो वीर रस में, Yeah, just like fighting. लड़ाई के रस, वीर रस। Gadai Gara. That when Lord Krishna, he promised to, before the battle of Kurukshetra, I will not fight. I will just be there as Sarati, chariot driver of my friend Arjuna. So युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, प्रतिज्ञा लिया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनूंगा। But then there was this one time when Bhishma was ready to kill Arjuna. He was determined, and tomorrow Arjuna will be perished. He's gone. तो एक दिन भीष्मदेव ने पूरा तय कर लिया कि कल मैं अर्जुन को मार डालूंगा। And so Bhishma started to throw arrows, pierce arrows, and actually he was trying to also shut down the chariot of Arjuna. And some of these arrows are the target is also Krishna. तो अर्जुन अगले दिन भीष्मदेव बहुत ही भयंकर युद्ध कर रहे थे और अर्जुन को बहुत भयंकर तीर मार रहे थे। इवन वो जो है अर्जुन के रथ को बंद करने के प्रयास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी तीर मार रहे थे। And some of these arrows actually hit the body of Lord Krishna. और कुछ उनमें से जो तीर है भगवान कृष्ण के शरीर पे भी लगा। And blood came out also. और उसमें से खून भी निकले। But Krishna does not have blood. लेकिन कृष्ण का तो कोई खून है नहीं। Inside is the same as outside. उनका अंदर और बाहर दोनों एक ही है। So it says there that the shooting of arrows to Lord Krishna is just like offering of flowers. जैसे बताया गया है कि भगवान जो कृष्ण के ऊपर जो तीर मार रहे थे वो पुष्प अर्पण करने जैसे था। And this marks that Lord Krishna has been injured as compared to the kissing of the boys and girls. और उनके जो शरीर पे जो घाव हो रहा था तो उसका वर्णन जैसे कि एक लड़का लड़की दूसरे को चुंबन करते हैं उस तरह से। Just like when the boy kissed the girl, this is what you call love marks. So जैसे कि एक लड़का लड़की को किस करता है तो उसको बुलाता है कि लव मार्क। Kissing and biting at the same time. किस मतलब किस करना और so there'll be a mark on the neck somewhere, and so the same thing but happened to Lord Krishna's body. तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो क्षत था घाव थे उसी तरह से लग रहा। And so at the time before passing away, the only wish that Bhishmadev would like to have, he would not want to leave his body without seeing the beautiful face of Lord Krishna. So भीष्मदेव अपना शरीर को त्याग नहीं करना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन किए बिना। And Lord Krishna fulfilled this desire of his devotee. और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की जो ये इच्छा का पूर्ण किया।
Krishna was there, while also at the same time, Bhishma was instructing Yudhishthira how to be able to successfully lead the kingdom, because he will be the next emperor. तो युधिष्ठिर महाराज जो कि अगला राजा बनने वाले थे, उनको भीष्मदेव जब शासन कैसे करना है उसके बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पे उपस्थित थे. As it says in the Bhagavad-gita, Janma karma chame devyam evam yo viti tatpata chakva deham punar janma na iti mam iti sa Arjuna. This is the perfection of one's life. If one understand the nature of the Lord's janma, appearance, his karma, to be divine, his activities, therefore, upon leaving one's body, he does not have to come back again in this material world, and he will be with Krishna. अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का जन्म का रहस्य को और कर्म का रहस्य को ये कैसे दिव्य है, इस चीज को समझ जाता है, फिर उसको ये शरीर त्याग करने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास चला जाता है. Krishna will give all the opportunities for his devotees to remember him at the time of death, and therefore they'll be eligible to enter into the kingdom of God and be there eternally. तो भगवान उनको ये बुद्धि प्रदान करते हैं कि कैसे वो उनके धाम में वापस जा सकते हैं और साथ में शाश्वत रूप में उनके साथ रह सकते हैं. Whether it is in Vaikuntha or in Goloka Vrindavan. तो ये वैकुंठ में भी हो या गोलोक वृंदावन में हो, कहीं पे भी. Even to attain Vaikuntha Loka is not so easy. इवन वैकुंठ लोक में जाना इतना आसान नहीं है. Bhishmadev has that relationship with Lord Krishna in Vaikuntha to serve his most worshipable Lord in his four-arm form, Narayana. तो भीष्मदेव का जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा था नारायण रूप में, चतुर्भुज नारायण रूप में, वो वैकुंठ लोक में. Those who perform successfully the sadhana bhakti and only will be able to serve the Supreme Lord, or would like to serve the Supreme Lord with awe and reverence, then they will attain Vaikuntha Loka. तो जो भगवान की सेवा बढ़िया सक्सेसफुली कर पाते हैं और खास करके ऐश्वर्य के भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है. One will serve the Supreme Lord in the same form, Swarupya Mukti, the same form as the Supreme Lord, having four-arm form. Every feature is the same except there is no Kaustuba gem and Sivatsa, this white hair, streak of white hair on the chest of Lord Vishnu or Lord Narayan. तो जो सारूप्य मुक्ति जिनको प्राप्त होता है उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे या नारायण जैसे होता है, चतुर्भुज रूप सब कुछ सेम होता है. केवल दो अंतर होता है, ये एक तो उनमें श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता है और कौस्तुभ मणि. श्रीवत्स चिन्ह मतलब एक व्हाइट हेयर होता है भगवान के छाती पे. Oh, there is no peacock feather on the crown. उनके पिकक फेदर भी नहीं होता है उनका क्राउन. Or when one would like to serve the Supreme Lord in a way where he'll be able to serve more intimately, and sometimes Krishna will put himself in a subordinate way, then this is in Goloka Vrindavan. तो अगर भगवान गोलोक वृंदावन में जब भक्त और ज़्यादा इंटीमेटली भगवान की सेवा करने की सुयोग प्राप्त होता है. It's like the Gopas who are in the fraternal or friendship relationship, Sakyaras. Sometimes they go on the top shoulder of Krishna and Balaram because this is how they play. So जैसे गोलोक वृंदावन में गोप बालक है, वो कभी कभी भगवान कृष्ण और बलराम के कंधे में भी चढ़ जाते हैं. Or Mother Yasoda would show the stick and try to bind Lord Krishna. और माता यशोदा छड़ी दिखाते हैं कृष्ण को,
उनका और बांध भी देते हैं। Or Lord Krishna will carry the sleepers of Nanda Baba. और भगवान कृष्ण नंद महाराज जी का, नंद बाबा की जो स्लीपर है उसको सिर पे लेके चलते हैं। Or Lord Krishna and Balaram will beg some food from the wife of the Brahmanas. कृष्ण और बलराम जाके जो ब्राह्मण पत्नियों से कुछ भोजन मांगते हैं। Or sometimes he will play like a child, and Lord Brahma will trick him, stealing the calves and the cowherd boys. कभी कभी वो छोटे बालक जैसे, और जैसे ब्रह्मा जी आते हैं उनका जो ग्वाल बाल और बछड़े को चुरा ले जाते हैं। But he is God, as Prabhupada says in the purport, 10th canto, that Krishna is God from the childhood till he grows up, is always God. इसलिए प्रभुपाद जैसे 10th कैंटो के पर्पट में बताते हैं कि हर परिस्थिति में कृष्ण भगवान है, अपने जन्म से लेके जब तक इस धराधाम में रहते हैं। So this is our purpose, to remember Krishna Antaryami. What's that? अंतर्यामी परमात्मा। Yeah, we should remember Krishna at the time of death. So हमें मृत्यु के समय पे भगवान श्री कृष्ण को याद रखना चाहिए। Yes, at the time of death. But you cannot remember Krishna without trying, without practicing. हम कृष्ण को याद नहीं रख सकते हैं अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं। So the materialists, no, they don't have any clue about this. They don't understand the purpose of human form of life. They're so attached to their body and to the extension of their body. तो भौतिकवादी व्यक्ति, इनको यह ज्ञान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा आसक्त है अपने शरीर के प्रति और अपने शरीर के जो विस्तार है। Did I tell you the story of a person in Kolkata? Did I tell you this? No? The Prabhupada tell one time a story about a person in Kolkata is a family man. He's so attached to his family. तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक कहानी सुनाए थे। कलकत्ता में एक बहुत धनी व्यक्ति था जो कि अपने परिवार के सदस्यों में बहुत ज्यादा आसक्त था। He was a rich man. बहुत ही धनी व्यक्ति। And he was so attached, he's always thinking of his family members. वो इतना ज़्यादा आसक्त था कि वो हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता रहता था। Even though they're very cruel to him. हालांकि वो उनके परिवार के सदस्य उनके प्रति बहुत ज़्यादा क्रूएल या बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। But all of his attention is always how to have his family be properly situated, comfortable, be comfortable. उसका हमेशा यही चिंता रहता है कि उसका परिवार के सदस्य कैसे हमेशा सुखी रहे, कंफर्टेबल रहे। So at the time of death, he was still thinking of his family. तो मृत्यु के समय भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। And his wealth not able to help him to live longer. He died suddenly. और उसका जो धन था उसको जीवित रहने में कोई मदद नहीं किया और अचानक उसका मृत्यु आ गया। But because he was always thinking of his family members, Prabhupada says next life he became a cockroach in the house, same house. तो क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति बहुत आसक्त था, घर के प्रति बहुत आसक्त था, इसलिए अगले जीवन में उसी घर में कॉकरोच बन के उस जन्म प्राप्त हुआ। And his family members found this cockroach roaming around the house. और उसके परिवार के सदस्यों ने देखा ये कॉकरोच घर में ऐसे इधर इधर घूम रहा है। And because they were cruel and they did not know actually that, oh, that was our Pitaji. और उनका ये पता नहीं था कि ये वास्तव में उनके पिताजी थे। So one of the children smashed the cockroach. The cockroach died. और उनमें से उनका बेटा उस कॉकरोच को मार दिया, स्मैश कर दिया। So the materialists are like this. I mean, even the cockroach cannot remember also what was he in his last life. तो भौतिकवादी लोग ऐसे ही हैं, हालांकि कॉकरोच को भी नहीं पता होता है कि उसके पिछले जीवन में वो क्या था। But for the devotees, they are given a chance next life, and when they come to a very high level of bhakti, they can remember their last life.
भक्त जो है अगर बहुत ही उच्च स्थिति में है तो उनके पिछले जन्म में क्या थे उनको याद रह सकता है. And this was in the case of Bharat Maharaj in the ये- 5th canto. 5th कैंटो में भागवतम में भरत महाराज के उदाहरण से इसको जानते हैं. Bharat Maharaj, he was in the Bhava stage of Bhakti, Bhava Bhakti. भरत महाराज भक्ति की भाव की स्थिति में थे. There is Sadhana Bhakti, composed of Vaidhi and Raganuga Bhakti. Then there is Bhava Bhakti and then Prema Bhakti. तो भक्ति में पहले साधना भक्ति है, साधना भक्ति में वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति है, और उसके बाद भाव भक्ति और उसके बाद प्रेम भक्ति. So Bharat Maharaj, he was the king, he was the emperor of the world, but when he knew that it was time for him to renounce his kingdom, he went to the forest. तो जो भरत महाराज थे पूरा पृथ्वी का वो राजा थे, लेकिन जब उनका पता लगा कि उनका समय हो गया और वानप्रस्थ का, उन्होंने जंगल में चले गए राज्य को छोड़ के. The Prema Bhakti is compared to the sun rising. It illuminates the entire universe. प्रेम भक्ति. प्रेम भक्ति जो है सूर्य उदय के साथ तुलना किया गया, जिससे कि माध्यम से सारा विश्व को सूर्य जैसे आलोकित कर देता है ऐसे. And Bhava Bhakti is compared to this like a horizon. It's like twilight. It's like early in the morning, you can see that there is light, but you have not seen the sun on the horizon. तो भाव भक्ति को ऐसे बताया गया जैसे कि हम सूर्योदय होता है, जैसे लाइट पूरा आ गया है लेकिन सूर्य दिख नहीं रहा हमें. So Bharat Maharaj, he was in this Bhava Bhakti. He's almost reached pure love of God. So भरत महाराज इस तरह से पूर्ण कृष्ण प्रेम में थे, भाव भक्ति के स्तर में थे. And he was alone in the forest. वो जंगल में अकेले थे. His main purpose is just to reserve the remaining days of his life and fully meditate on the Supreme Personality of Godhead. तो उनका लक्ष्य जीवन का यही था कि वो जितने समय बाकी है वो पूर्णतः भगवान के ऊपर मेडिटेट करना. And while on meditation, he heard a deer, a mother deer, being chased by a wild animal. जब वो जो ध्यान में मग्न थे तब उन्होंने शब्द सुना कि एक जो हिरन को एक जंगली पशु उनको खाने के लिए उसके पीछे था. And somehow or other, the mother deer gave birth to a baby deer, and the mother died. और उस समय वो जो हिरन थी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और खुद मर गई. And therefore, he saw this baby deer. He knew that the baby deer will also die if no one will take care of the baby deer. तो उन्होंने Fawn, it's called fawn. जो हिरन की बच्चा था तो उसको वो अकेला हो गया था, और भरत महाराज को पता था कि उनका अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो वो भी मर जाएगा. So he took care. He took the deer, the fawn, fed the deer, protect the deer, be sure that no wild animals also will come close. So day and night, 24 hours, Maharaj Bharat is thinking of the deer. तो उन्होंने उस हिरन को अपने पास, हिरन के बच्चे को अपने आश्रम में ले गए और उसको देखभाल करने लगे, उसको खिलाने लगे, उसको सुरक्षा देने लगे ताकि कोई पशु भी, जंगली पशु उसको आक्रमण ना कर सके, और दिन रात उस हिरन के बारे में वो सोचते थे. He cannot eat without thinking of the deer. He was thinking, oh, maybe the deer is hungry, or he cannot take rest, maybe, or the deer needs more rest also. No, he became like the foster parent of the deer. तो खाते समय भी वो सोचते थे कि हिरन ने खाया है नहीं, सोते समय भी यही सोचते थे कि हिरन ने सोया है नहीं, हर समय उसको सोच रहे थे. मतलब वो एक तरह से वो हिरन की
हैं, पोस्टर फादर बन गए। And one day, finally, the very last few moments of his life, Bharat Maharaj is about to die, and he was also thinking of the deer. और अपने अंतिम समय में जब भरत महाराज शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय भी वो हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। Whatever one thinks at the time of death, that he will attain. Whatever the mind's condition, Prabhupada says, whatever the mind's condition, your next body will be determined. प्रभुपाद बताते कि हमारी मृत्यु के समय पे हमारे मन का स्थिति जैसे होगा, वैसे ही उसी तरह से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। Therefore, he was thinking of the deer. He became a deer in next life. क्योंकि वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो अगला जीवन उनमें उनको हिरण का ही प्राप्त हुआ। But because of his development of bhakti, he remembered his last life, the deer. Now he is fully conscious that he was Bharat Maharaj before, and he became a deer this time. क्योंकि उनका उच्चतर भक्ति की उच्चतम स्थिति के कारण उनका हिरण के शरीर में भी याद था कि मैं पिछले जीवन में भरत महाराज था। Can you remember your last life? हम में से किसी को याद है हमारा पिछला जीवन? Anyone here knows? Unless you go to a Jyotish, you can ask him, oh, what were you last life? तो हो सकता है कि आप ज्योतिष के पास जाओ तो वो बता सकता है कि शायद आपका पिछला जीवन क्या था। So now he wanted to become very careful. He doesn't want to associate with other deer who's doing prajalpa. अभी वह बहुत ही सतर्क थे और दूसरे जो हिरण थे उनके पास नहीं जाते थे, उनके जो प्रजल्प में लगे होते थे। Other deer just want to play. No care at all. But Bharat Maharaj, who was the deer right now, he wanted to be sure, I have to be very careful. I cannot make a mistake now. तो भरत महाराज जो कि अभी हिरण के शरीर में थे, वो बड़े सतर्क थे, वो सोचते कि मैं अभी बिल्कुल ही गलती नहीं करूं। And then the next life, he became Jada Bharat. He took birth in a Brahmana family. तो अगला जीवन वो जड़ भारत के रूप में जन्म लिए एक ब्राह्मण परिवार में। High birth, not necessarily Vaishnavas. बहुत ही उच्च बर्थ था, जन्म था, लेकिन वैष्णव परिवार नहीं था। And he remembered again that before he was a deer, and before that he was Bharat Maharaj. And now he pretended to be deaf and dumb, like a fool. तो उनको अभी भी याद था कि पिछले जन्म में वो हिरण थे और उससे पिछले जन्म में वो भरत महाराज थे, इसलिए वो बहुत ही सतर्क थे और अपने आप को एक गूंगा बहरा बुद्धू व्यक्ति जैसे व्यवहार कर रहे थे। He doesn't want to get involved in any material things, that if his father told him to do this, he will do the opposite. वो कोई भी भौतिक कार्य में अपने आप को नहीं लगाते थे और उनके पिता जो कार्य बोलते थे करने के लिए उसको उल्टा करते थे। The family members think that he is useless. परिवार के सदस्य सब सोचने लगे ये तो बेकार का व्यक्ति है। But he is a fully realized personality. लेकिन वास्तव में वो पूर्ण भगवत साक्षात्कार उनके पास है। And sometimes they would even feed him leftovers that even animals will not eat. कभी कभी तो उनको ऐसा खाद्य देते थे खाने के लिए जो कि पशु भी नहीं खाना चाहेगा। He's useless anyway, so maybe we can just put him like a scarecrow in our fields, agricultural field. तो सोचते थे कि ये तो बेकार का व्यक्ति है, कोई फायदा नहीं है, इसको हमारे जो खेत है उसमें वो रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। You know what's a scarecrow? It's like made of hay, but they will make that hay or made of grass look like a feature of a man guarding the field from the birds. आप सबने देखा होगा खेत में कभी कभी लोग वो घास फूस से बना देते हैं आदमी में, जैसे कि आदमी जैसे दिखता है ताकि उससे पशु जो है डरे। So well, he's better than the stationary scarecrow. Actually, he can move. We can just tell him. तो सोचते कि वो जो स्थायी ऐसे जो नकली जो होता है जो आदमी जैसे दिखता है उससे तो ये बेटर है क्योंकि ये मूव थोड़ा तो कर सकता है। Then स्टेशनरी they came there, and yes, some dacoits came
तो जब वो उसी खेत में रखवाली कर रहे थे, कुछ डाकू आते हैं। Dacoits would like to have an alive person to be offered to Durga, Kali. तो डकैत जो है किसी एक जीवित व्यक्ति को काली माता को ऑफर करना था उनको। So they took Jadabharat to be offered to Kali. तो उन्हें जड़ भरत को पकड़ के ले गए कि हमें इनको काली के सामने बलि चढ़ाएंगे। And at the time of offering, before they killed Jadabharat, Kali became alive. It's like his deity form. She became alive, and she killed all the gundas. जब डाकू लोग जड़ भरत को मारने के लिए तैयार हुए तो जो काली का विग्रह थे वो बिल्कुल प्रकट हो गए और सारे जितने भी डाकू थे, गुंडे थे, सबको मार डाला। And then was this king Rahugana. He was traveling, and somehow or other they will need another palanquin carrier, strong, healthy, like they found Jadabharat. तो एक बार राजा जो राहुगण है पालकी में जा रहे थे तो उनको जरूरत पड़ गया और एक पालकी वाहक की, तो शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था। तो राहुगण उनको जड़ भरत मिल गए। Yeah, Jadabharat became one of those palanquin carrier. तो जड़ भरत जो है पालकी वाहक बने। But then the king was like a little upset because the palanquin, sometimes it will stop and then it will move, then it stop. There's abrupt stop, and he was like, "Who is the cause of this? What's going on?" तो राजा राहुगण बड़े परेशान हुए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो पालकी चलता था और अचानक रुक जाता था, फिर चलता था, फिर अचानक रुक जाता था, तो बड़े डिस्टर्बेंस था। वो पूछने लगे कि कौन ऐसा कर रहा है। Because Jadabharat was being very careful. If there's some ants, he sees some ants going on the way where the palanquin is being carried, he will stop and he will let the ants pass by. Then he will go. But then he creates disturbance by doing this. So जड़ भरत जा रहे थे तो रास्ते में कोई चींटी जा रहे हैं आगे से तो रुक जाते थे अचानक, और चींटी को इंतजार करते थे चींटी चला जाए, फिर उसके बाद वो चलते थे। इसी तरह से वो चल रहे थे। इससे लेकिन पालकी चलने में, पालकी मूवमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा। And then he chastised, King Rahugana chastised, "You fool, what are you doing?" तो फिर राजा राहुगण ने जड़ भरत को डांटा, तुम मूर्ख कैसे कर रहे हो? And Jadabharat says, "Well, there are some living entities. I let them pass by first." तो जड़ भरत ने बोला कि कोई जीवात्मा जा रहा है तो फिर मैं उसको पहले जाने देता हूँ। Well, actually, he didn't know that Jadabharat is a fully self-realized soul. तो राजा राहुगण को ये नहीं पता था कि जो जड़ भरत है पूर्ण आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। And he started also to reply to King Rahugana, "Now you're a king, but you don't know your next life. Maybe you're the one who will be carrying a palanquin of a different king." तो राजा राहुगण को बताते हैं, अभी आप राजा हो, लेकिन हो सकता है कि अगले जीवन में और किसी राजा का आप पालकी ढो रहे होगे। It's like what happened to that Calcutta man. Very rich man, but the next life he became a cockroach. तो जैसे कि उस कलकत्ता का व्यक्ति थे, वो बहुत धनी व्यक्ति थे, अगला जीवन में उन्हें उसको कॉकरोच का जन्म मिला। So, yes, King Rahugana became a disciple of Jadabharat. राजा राहुगण जो जड़ भरत के शिष्य बन जाते हैं। There's another story about this King Chitraketu. He had so many thousands of wives, and then one wife begot a child, but then the other queens became envious and they killed the child. कि राजा चित्रकेतु की कथा में आता है तो उनके अनेक पत्नियां थे, उनमें से एक पत्नी को एक संतान उत्पन्न होता है, बाकी जितने भी रानी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं उनसे और उनके बच्चों को मार डालते हैं। And the king was crying and crying because the Muni, who is that? Angira Muni? Angira Muni. Yeah, Angira Muni. And Narad Muni says, "You will have a child, but he will be the cause of your joy and misery at the same time."
तो अंगिरा मुनि ने उनको बोला था कि आपको संतान तो प्राप्त होगा, लेकिन वो आपका आनंद का भी, हर्ष का भी विषय होगा और शोक का भी विषय होगा। That's true. When the child took birth, king was so joyful. Huh? King Chittaketu, right? It was so joyful. And then when, because of envious mentality of the other queens, they killed the son, the only son. But then he was revived. The son was revived. He says, I may be your son this time, but how many fathers did I have before? So, जब उसका पुत्र का जन्म हुआ था, राजा चित्रकूट तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में उनके पत्नियों के और अन्य रानियों की ईर्ष्या के कारण उस पुत्र का मृत्यु हो जाता है, तो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन बाद में नारद मुनि की कृपा से वो संतान को जीवित कर देते हैं। तो वो संतान उनको बोलता है कि ओ मेरे तो कितने पिता पिछले जा चुके हैं, So पिता नहीं हो। In conclusion, when our time is up, our time is up. We cannot do anything. Nobody will have a choice to say, oh, no, I want like, that's why everyone wants to live eternally, because the spirit soul is eternal. But when the body is over and material nature is offering us the second or the next life, then we have to move on. No choice. तो हमें कोई, हमारे में से कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास कोई उसका चॉइस नहीं है। जो भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति है, जब हमारा इस शरीर के अंदर खत्म हो जाता है समय, तो हमें दूसरा शरीर निश्चित रूप से प्रदान। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, in order to attain pure love of God, minimum you need 3 lifetimes. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 जीवन चाहिए। How is that? कैसे समझे इसको? It depends on how you chant the Hare Krishna Mahamantra. ये आप कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। The first lifetime before attaining love of God, the first of the 3 minimum lifetimes is Nama Aparad. You're chanting the holy name with offenses. तो तीनों में जीवन में से जो पहला जीवन है, उसमें आप नाम अपराध के साथ जप कर रहे हैं। The second one will be Namabhas, the second last before attaining love of God. तो सेकंड लास्ट जो प्रेम भक्ति प्राप्त करने से पहले जो जीवन है, उसमें नामाभास के स्तर पर जप। And the third one, which is the last of the 3 births before attaining love of God, is when you chant Sudanam. तो जो तीसरा जन्म है जिसमें कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, वो शुद्ध नाम हम जप करते हैं, तब कि हम शुद्ध भक्ति। But it is possible to attain it in one lifetime. But then again, one must have been chanting so many lifetimes before this is gonna be your last life. So हम एक ही जीवन में भी ये सारे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये भी हो सकता है कि हम बहुत जन्म से जप कर रहे हैं। As Prabhupada says, within a moment you can become Krishna conscious, but the one moment when you will become Krishna conscious, you must have performed many lifetimes attempting to become pure. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम एक क्षण में भी कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अनेक जन्मों में ये प्रयास कर चुके हैं। Unless you get kripa, siddhi. अगर हमें कृपा या सिद्धि प्राप्त नहीं है, That's why many, if not most, they always ask, Maharaj, give me your kripa. Ashabad, Maharaj, give me your mercy, give me your blessings. बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मुझे महाराज, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। But kripa, you cannot receive it without actually having the mercy of the pure devotee of the Supreme Lord. तो वास्तव में शुद्ध भक्त की कृपा के बिना हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। And the mercy of the pure devotees are his instructions. और जो शुद्ध भक्त कृपा है, उनका
उपदेश है आदि। One cannot attain the mercy from a pure devotee just by sitting down and not doing anything. किसी शुद्ध भक्त का हमें कृपा वैसे प्राप्त नहीं कर सकते, उनको कुछ बिना फॉलो किए जस्ट सामने बैठ गए। Attaining the mercy from a pure devotee means following his instructions. एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करने का अर्थ ये है कि हम उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं। As just like Srila Prabhupada says, you just follow the 4 regulative principles and chant minimum 16 rounds. You will attain Krishna Prem. जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप 16 माला का जप करें और 4 नियमों का पालन करें, आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर जाएंगे। It's not so easy for a person who doesn't want to do anything to follow the 4 regulative principles and even to finish 16 rounds attentively without any offenses. तो ये इतना आसान नहीं जो कि कुछ भी नहीं करना चाहता कि 4 नियमों का पालन करना और 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना। Right? It's not so easy. He said, did I hear yes? Hanji? हाँ जी। Not so easy to finish 16 rounds without any offenses. We can chant 16 rounds inattentively, very easily, like, having our cell phone, looking at the social media and chanting at the same time, or talking with somebody, or your mind is everywhere chanting. That is not chanting. तो वास्तव में 16 माला जप करना ध्यान पूर्वक बिना अपराध के इतना आसान नहीं है। हम 16 माला तो जप कर लेते हैं इनअटेंटिवली, जैसे कि कोई जप भी कर रहे हैं, सेल फोन में भी कुछ देख रहे हैं, या दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, या मन चारों तरफ घूम रहा है, इस तरह से जप तो आसानी से हो जाता है। So how do we expect to receive the mercy? और फिर हम आशा करते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हो, or be blessed to make advancement, और आशा करते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हो कि हम आगे बढ़ें भक्ति में, which means it'll take us millions and millions of lifetimes. तो इसका अर्थ है कि हमें बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म लग सकते हैं। Narad Muni is famous for giving kripa, shakti, or by his mercy, by his blessings, a devotee or a person can become a pure devotee instantly. तो नारद मुनि कृपा देने के लिए बिल्कुल फेमस है, तो किसी का भी कृपा देते हैं तो इंस्टेंटली आप कोई शुद्ध भक्त बन सकते हैं। But they have to follow also what Narad Muni says. इसके लिए नारद मुनि ने जो बोला है उसको पालन करना पड़ेगा। There's that Mrigari the hunter. जैसे मृगारी जो शिकारी He था, still has to chant. We cannot expect that mercy will come just by sitting, not doing anything. तो हम ये आशा ना करें कि कृपा हमें ऐसे ही प्राप्त हो गया बिना कुछ किए, केवल बैठे बैठे। Narad Muni also has a snake disciple. नारद मुनि का एक शिष्य थे जो कि सर्प था। But then the snake also has to follow Narad Muni's advice, instruction. तो उस सांप को भी, सर्प को भी नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, And the snake became pure devotee as well. और सर्प भी शुद्ध भक्त बन गया। So yes, it's a little difficult section of the Bhagavatam because we're all practically the whole time I was here we're talking about death, we're talking about old age. So ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है भागवत में। ये पूरा जो जितने दिन रहा उसमें केवल मृत्यु और वृद्धावस्था के बारे में बात करता है। Mrityu jara vyadhi doka dosha. दर्शन। Yes. Birth, death, old age, and disease. We've been talking this for the last, 4 or 5 days. But it's never hacking. It's never tiring. It's always fresh. तो हम पिछले 5 दिनों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं कि बोरिंग था या मतलब पुराना, ये हमेशा फ्रेश, नित्य नवीन। And tomorrow you'll be still talking about death. And the next few days. आगे वाले कुछ दिनों में भी उसी सब्जेक्ट पे मृत्यु के बारे में ही चर्चा रहेगा। But it's always fresh. लेकिन हमेशा ये फ्रेश है। This is the nature of transcendental knowledge. ये आध्यात्मिक ज्ञान का स्वभाव है।
Unlike if you read newspapers, you read it, then you throw it after. Or you will spend few hours and actually nothing is, only the names are changed, the dates are changed, the events are changed, but it's still the same. Somebody died, somebody took birth, calamities. Every day is the same, but it's garbage after that. And then the next day you will read garbage, every day garbage. And the materialists never get tired. Oh, okay, they get tired. They throw it in the garbage. So, जैसे कि हम न्यूज़ पर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फेंक देते हैं कूड़ेदान में, या हम सेम खाली डेट, प्लेस और नाम ये सारे चेंज हो जाता है, लेकिन कंटेंट्स तो वही होता है. किसी का मृत्यु हो गया, किसी का जन्म हुआ, कोई कैलामिटी या विपत्ति आ गया, और फिर हम उसको पढ़ के बोर हो गए, फिर फेंक देते हैं कूड़े में. But here we put Bhagavatam on the throne, golden throne. लेकिन हम श्रीमद् भागवतम को सिंहासन पर रखते हैं, सोने की. And it's good since time immemorial. और ये अनंत काल से इसको पढ़ा जा रहा है. Bhagavad-gita was mentioned. It was spoken to the sun god Vivasvan millions of years ago, and now we're still reading it, and till the end of Kali Yuga, well, up to 10,000 years, they will still be reading Bhagavad-gita and Srimad-Bhagavatam. तो जो श्रीमद् भगवद गीता है, करोड़ों साल पहले सूर्य के देवता विवस्वान को बोला गया था, और अभी भी हम इस भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी कम से कम 10,000 साल तक इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को. So make it a regular habit, along with chanting Hare Krishna Mahamantra. You should also read Bhagavad-gita and Srimad-Bhagavatam every day. This is part of our diet. Do not be captured by Maya. तो हमारे जप के साथ साथ हमें डेली श्रीमद् भगवद-गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए. ये हमारा खुराक की पाठ है. फिर हम इसको करेंगे तो हम माया में नहीं आएंगे. Maya will always want to capture the conditioned soul, not to get out of this material world and to bind the conditioned souls here, birth after birth. Put him into illusion. तो माया का प्रयास ये रहता है कि हमें इस भौतिक जगत में बांधे रखें और इस जन्म मृत्यु चक्र में घुमाते रहें, और हम हमेशा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Any question? से प्रश्न. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Maharaj, as you told about Bharat Maharaj, he was on stage of Bhagavad. Then why he became distracted? Was there any reason or aparadh because of that he became distracted at that stage? तो बताया गया कि भारत महाराज भाव और में थे, तो क्या उन्होंने कोई अपराध किया या क्या हुआ उसके कारण उनसे उतर गया? Because he was alone. कारण ये है कि वो अकेले. There is never a time a devotee will be alone, should be alone. तो ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए कि भक्त अकेला रहे. Look at the 6 Goswamis. They always have discourse about Lord Krishna, about his pastimes. हम देखें 6 गोस्वामी को देखते हैं तो हमेशा वो साथ में रह के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करते थे. So never think that you are advanced enough and you can go in the Himalayas or in the cave and just perform bhakti alone. No. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि मैं जाके अकेले रह के हिमालय में गुफे में रह के. I was just reading, I'm paraphrasing, Prabhupada was saying in one of the lectures, you can be only happy with Krishna. तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि आप केवल कृष्ण के साथ ही रह के प्रसन्न And रह सकते Krishna is present whenever the devotees are, wherever they are. He's present. हैं. जहाँ पे भक्त है कृष्ण वहाँ पे उपस्थित है.
It's not possible to be happy or attain love of God just by yourself. It's not possible. अकेले में रह के हम कृष्ण भक्त प्रेम को प्राप्त करना संभव नहीं है। So Bharat Maharaj was this. भरत महाराज अकेले थे। He was alone. He got diverted. इसीलिए वो अपना डाइवर्टेड हो गए। But if there is a devotee with him, at least one, and he will warn, hey, Bharat Maharaj, your attention is being diverted to the deer. How is it that you're always thinking of the deer every day? You're losing your focus here. तो अगर कोई एक भी भक्त उनके साथ होता तो वो बताता, भरत महाराज आप अपना जो अटेंशन है आप अपने हिरन के बारे में सोच रहे हो, अपने रास्ते से आप भटक गए हो। Right? Should never be alone. Always have someone, like develop a friendship with someone whom you can have faith on that person. You'll be able to reveal your mind and ask advice. This is our movement is established to have this kind of association of devotees, 6 loving exchanges between devotees. तो हमें कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे कोई ना कोई भक्त होना चाहिए जिनके ऊपर हमें पूरा विश्वास हो, जिनका अपना मन की बात खोल के बता सकें, उनसे उपदेश ग्रहण कर सकें। हमारा जो संस्था है ये 6 प्रकार के जो प्रेममय संबंध को स्थापना करने के लिए ही है। Okay? You want to be alone? You can be, but it'll be difficult to attain love of God. अगर हम अकेला Almost रहेंगे, impossible. हम अगर अकेले रहेंगे तो शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना almost impossible. Lord Chaitanya Mahaprabhu, who came 500 years ago to show us how to attain love of God, is always surrounded by devotees. He has an assistant, Sarup Damodar. श्री चैतन्य Never महाप्रभु alone. श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए हमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना दिखाने के लिए। वो कभी भी अकेले नहीं थे, हमेशा अपने भक्तों के संग में रहते थे। उनका सेक्रेटरी भी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके साथ हमेशा रहते थे। कौन प्रश्न माताजी? Give the mic there, please. Yes. Krishna Maharaj, most humble obeisances into your lotus feet. Maharaj, what is the actual meaning of association of devotees? तो वास्तव में भक्तों का संग का क्या अर्थ है? वास्तविक अर्थ क्या है भक्तों के संग? When you see a devotee, Mataji, how are you? Oh, I'm fine, I'm okay. How are you? And the other devotee will say, I'm good. Is that association? तो जैसे हमें किसी और एक माता जी से मिलते हैं, हम पूछते हैं माता जी आप कैसे हैं? बोलते हैं हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बोलते हैं आप कैसे हो? हमें बोलते हैं हम बहुत बढ़िया हैं। There are 6 types. Yeah. 6 types of association. It says in the Nectar of Instruction, the Dati, Patikanati, you give gifts, you accept gifts. Now the Brahmanas, they don't have anything to give except knowledge. It's supposed to be they are poverty stricken, but they are very rich in knowledge. So you receive knowledge from them, they give knowledge to you, or maybe when you're having a birthday, they can give you a nice cake or something. Cake prasad. So भक्ति में ये 6 लक्षण है प्रेममय संपर्क का। ददाति प्रतिगृणाति, जैसे कि कुछ उपहार देना, कुछ उपहार लेना। ब्राह्मण जो होता है बताया जाता है कि वो तो गरीब होता है, प्रभुत्व, और उसके पास होता नहीं, तो क्या देता है? उसके पास कुछ धन नहीं होता लेकिन उस पर ज्ञान बहुत होता है, तो ज्ञान देता है और ज्ञान ग्रहण करता है। और हो सकता है कि जब किसी का कुछ बर्थडे है तो हम केक प्रसाद। Yes, well, we're talking about prasad. It's the same. Offer prasad and accept prasad. दूसरा भी जो है
इसमें ये प्रसाद देना और प्रसाद ग्रहण करना। That means serving prasad also. तो उसमें प्रसाद को सर्विस करना, वो भी बांटना, वो भी आता है। Others are not so keen in serving prasad. They just want to take prasad. कुछ लोग होते हैं प्रसाद ग्रहण करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, प्रसाद बांटने में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। That's all right also, because you make advancement in honoring prasad, but you will make more advancement if you serve the Vaishnavas. Prasadam. तो अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं भी तो भक्ति में बढ़ेंगे, उन्नति होगा। लेकिन हम अगर प्रसाद वैष्णव को सर्विस करते हैं, बांटते हैं, तो वो ज्यादा हमारा उन्नति होगा। And revealing one's mind confidentially to a devotee whom you have confidence, you trust, and also getting advice from them how to proceed in bhakti. तो और किसी भक्त के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, हम उनसे अपने बारे में बताना, अपने हृदय को खोल के बताना है और उनसे इंस्ट्रक्शन ग्रहण करना है कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। In this way, the loving relationship amongst devotees, the bondage will become stronger and stronger. और इसी तरह से भक्तों के बीच में जो संबंध है वो मतलब दृढ़ होता है। If you know someone who is excelled in making garlands for Sri Radha-Madhava, you can ask confidentially, Mataji, I really appreciate your nice garlands. I want to do the same for my deities or for Sri Radha-Madhava. One day, can you show me how to do this? So this is actually now is a exchange of loving relationship, association. जैसे कि आप देखते हैं कि कोई माता जी बहुत ही अच्छा माला बना रहे हैं श्री राधा माधव जी के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि माता जी आप बहुत ही अच्छा माला बनाते हैं, तो मैं भी सीखना चाहती हूँ कि कैसे माला बनाया जाए राधा माधव के लिए अपने घर में दीजिए। Okay? Anything else? Yes, Maharaj. Thank you. Thank you so much. Thank you. हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू। अच्छा महाराज, जो मेरा क्वेश्चन है उसका 90% तो उत्तर ऑलरेडी आपने दे दिया है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि भक्तों का संग भी है और लाइफ डेथ कब आती है इसका कोई पता नहीं है। अगर कोई ऐसे स्टेज हो कि जब डेथ आए, भक्त अकेला हो, अपने एसोसिएशन में ना हो, तो उस टाइम उसको क्या केयर, एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए? क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। उस टाइम हमारे मन अच्छी सोच में हो तो कोई एक्स्ट्रा क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके लिए? So you said already you have given the answer 90%, but something is left that I just want to ask. So we are always in association of, we may be always in association of devotees and chant Hare Krishna. But sometime if the death comes, and death comes, and when we are alone, or when death comes, and suppose we are alone, and then what extra care should be taken? ये क्वेश्चन है। if alone, you are never alone. You're always with Krishna, of course. But to realize that Krishna is there is another thing. Alone means no one knows that you are sick. Or what? What do you mean by alone? Alone means at the time of death, it's alone. You may be away from home or anywhere else. The hospital. Krishna will always protect his devotees. Okay. So you could be somewhere where no one is around. Krishna knows within your heart how your sincerity is, and that will be reciprocated accordingly by the Supreme Lord. तो कृष्णा हमारी सिंसियरिटी को जानते हैं, और अगर हम ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है तो कृष्णा प्रोटेक्ट करेंगे। According to your surrender, Krishna will reciprocate and protect you. Don't expect 100% protection if you're only 10% surrender. तो हमारी शरणागति के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर पूर्णतः शरणागत है, कृष्ण हमें साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर हम 10% सरेंडर है तो 100% प्रोटेक्शन आशा नहीं कर सकते।
It's like this is not like insurance plan here. Okay. You buy some kind of premium and you're expecting 100% coverage, but you only able to afford a certain amount, so you don't get the full coverage, right? So ये इंश्योरेंस प्लान की तरह नहीं है, आप कुछ थोड़ा प्रीमियम भरे और 100% आपको कवरेज मिलेगा. Usually you still have to put something from your pocket. And this life is called life insurance. It doesn't really save you from the time of death. It only provides you something, the expenses after you die. तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे है कि आप अपने कुछ प्रीमियम भरते हैं, वास्तव में मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, लेकिन आपका मृत्यु हो गया तो बाकी लोगों को कुछ एक्सपेंसेस देते हैं. Bhakti, if you perform bhakti sincerely to the best your ability, Krishna will again provide what you're lacking, and is always maintaining what you have. This is bhakti. तो अगर हम सिंसियरली गंभीरता से भगवान की भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमें जो हमारे में जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे. Okay, sir? Okay, thank you, Maharaj. Very clear answer. Very clear. Thank you. So we stop here now before we pass the Paran time. हाँ, so question. Okay, one last question. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, my question is how to chant offenselessly? How to chant offenselessly? Prabhupada was once asked. So प्रश्न ये है कि अपराध रहित होकर कैसे जप करें. What do you do when you chant? What do you think when you're chanting? So प्रभुपाद बताते हैं हम जप करते समय क्या करते हैं, जप करते समय क्या सोचते हैं. You don't think of anything else. हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए. You just try to hear the sound vibration. हमें केवल जो साउंड वाइब्रेशन है, शब्द तरंग है, उसको श्रवण करने का प्रयास करें. Even what you are planning to do, the service that you are planning to do for Krishna and the Vaishnavas on that day, never even think of that while chanting. That is inattentive chanting. तो इवन अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा या वैष्णव की सेवा के लिए भी कुछ प्लानिंग बना रहे हैं तो वो भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी इनअटेंटिव चैंटिंग बना रहे हैं. There is nama rupa. It will come automatically. His activities, his qualities and form. Automatically, this will all come. You don't have to think of what is Krishna doing or what. No, that's beyond right now. We're in the beginning stage. So just try to hear the holy name. If you want to be attentive, chant in front of Tulsi Devi, or chant in front of a picture of Sri Radha Madhava, or if you have a deities, Gaur-Nitai, Jagannath, Baladev, Subhadra, that will help you be more focused. And at the same time, only hear the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो अगर हम ध्यान पूर्वक केवल हरे कृष्ण महामंत्र सुनने के प्रयास करना चाहिए, और नाम रूप गुण लीला सेवा ये बाद में अपने आप ही रिवील होता है. और जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो हम बेटर है कि तुलसी महारानी के सामने या श्री राधा माधव के फोटो को सामने रखते हुए इस तरह से अगर जप करेंगे तो हम ज़्यादा ध्यानपूर्वक जप. Set a specific time, a certain time in the day, especially the early morning hours, Brahma Muhurta time to chant your rounds. You can chant your rounds also, or you can chant japa, or you can chant Hare Krishna while driving, but that is inattentive. I'm sorry. That doesn't count in your 16 rounds. तो हम खास करके एक पर्टिकुलर समय रखना चाहिए जप करने के लिए, खास करके ब्रह्म मुहूर्त समय सबसे बहुत बेहतर है. और जब हम ड्राइविंग करते हुए जप कर रहे हैं वो उसको गिनती में नहीं लेना चाहिए, वो इनअटेंटिव चैंटिंग है. Because you're thinking, oh, it's green, okay. Oh, it's red. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, I have to stop. Hare Krishna.
Oh, there's a traffic here. It's traffic jam. How to get? Is that attentive? अच्छा, अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो रेड लाइट आ गया तो रोज रेड लाइट है, रुकना है, ग्रीन आ गया आप चल सकते हैं, अभी भीड़ है बहुत ज़्यादा, इस तरह से सोच के अगर गाड़ी साथ से हरे कृष्णा कर रहे हैं तो इनअटेंटिव जब Some devotees I know, before they eat, because they cannot finish their 16 rounds in the morning because they have to get up early, do puja. So at least they will chant 4 rounds before eating. Eating breakfast, eating lunch, eating dinner, and in between you have a break also. Like tiffin time or some break at work, you chant, you find a space somewhere away from everybody and just focus on the holy name. So कुछ वक्त लोग जैसे कि उनके सुबह पूजा करना है या कुछ करना होता, पूरा समय नहीं निकाल पाते 16 माला जप करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट से पहले 4 माला करते हैं, फिर लंच से पहले 4, डिनर से पहले 4, और बीच में भी किसी ब्रेक के समय में कुछ में अलग से जाके बैठ के पूरा माला वो पूरा करते हैं. Then you'll be able to chant your rounds attentively. इस तरह से अपना माला जो है हरे कृष्ण महामंत्र अटेंटिवली जप कर सकते. The root cause of offensive chanting is inattentiveness. If you're attentive, at least 50% of the offenses is gone because you're attentive. Attentive means only hearing. अगर हम अटेंटिव हैं तो फिर हमारा 50% के करीब अपराध जो खत्म हो सकता है. अटेंटिव का अर्थ है कि ध्यानपूर्वक सुनना. And while chanting also, at least you can think of, oh Krishna, please engage me in your service, because this is what is the meaning of the holy name. Repeatedly you can chant, but from time to time, oh Krishna, Hare Krishna, please engage me in your service. In your mind you can think like that. That's okay. हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें और सुनते रहें और बीच बीच में सोच सकते हैं कि हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाए, क्योंकि ये मीनिंग है उसका. We stop here because Hare Krishna, we have so many things to do except especially prasadam time. This is another session. It can be a series of classes. Maybe next time when I come we can spend some time about the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Yes, Maharaj. Thank you. Okay? महाराज बोल रहे हैं कि अगली बार आएंगे जब हरिनाम के जप के ऊपर सेशन ले सकते. Thank you very much. I spent a few days here. Today is my last day. Going back to Vrindavan tomorrow. So give us your blessings also so that we can serve nicely and continuously in the holy Dham. Srila Prabhupada ki जय. Hitai Gaur Premanande. Thank you, Maharaj, for nice, wonderful association or classes given by you. Thank And you. we hope that you will come soon, and we can have special session of holy name also. Hare Krishna. And आज इवनिंग में शाम को 6:30 से 7:30 तक स्पेशल हरे नाम कीर्तन है महाराज जी के द्वारा, तो यहाँ पे टेम्पल हॉल में होगा, और उसके बाद भगवदगीता की क्लास भी होगा. हरे कृष्ण. Hare Hare.